Assalamu alaikum and very good morning to my dear students. How are you all? I hope you all are healthy and happy at home. Alhamdulillah for that. So today we are going to learn lesson number 20, right? Lesson number 20 of class 6. I repeat, lesson number 20 of class 6 and page number 95. Page number 95. And our topic is Eid Mubarak. See, you can see here alif in the bracket. Means in this lesson there is two part, alif and ba, A and B, right? So today we are going to learn part A of Eid Mubarak. So see, this topic make you smile, right? And you can see in the picture there is two persons, two male people are greeting to each other about Eid, right? Now see the book. Rashid said, Assalamu alaikum means peace be upon you. Salim said, Wa alaikum assalam and peace be upon you too. See my dear students, whenever we will meet with someone, first we have to say salam. Why? It is the sunnah way of our Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Right? There is hadith also. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that assalamu qablal kalam means Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam said, say salam before you talking, right? So it is sunnah way of our Nabi sallallahu alaihi wasallam. So if we follow these small things, that time we got sawab from Allah Ta'ala. We have to sawab for the following the Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam's sunnah, right? Rashid said, Eidukum Mubarak. To all of you, Eid Mubarak. Salim said, Kullu Amin wa Antum bi khairin means best wishes for a happy new year. Wa Antum bi khairin and you all are well. उन्होंने उनको विश किया है ईद के लिए, राइट? ऐसे हमारा नया साल कब शुरू होता है? मुहर्रम में, राइट? Rashid said, wa antum bi khairin and you all are well too. Salim said, Hal zurtumul asdika wal aqarib? Have you visited the friends and the relatives? Right. Hal, this is the question word. Zurtum, past tense. Asdika, this is the plural of sadikun, and aqarib also plural. Right. So, have you visited with the friend or have you visited the friends and relatives, right? So he asked to the Rashid asked to the Salim that you visit with the friends and relatives. See, whenever our Eid festival is there, that time we will meet to our friends, our relatives. Some friends are come to our house and we serve them some sweets and milk and anything, right? So they ask to each other that you meet with your friends or relatives. So Rashid says, La, no, wanahnu narju zalika. Wanahnu and we hope for that. Means अभी मिले नहीं है लेकिन मिलने वाले हैं, right? Salim said, Maza nukaddimu lahum hadiya. Maza nukaddimu lahum hadiya. What do we give them a gift? Right? So ऐसा होता है ना कि ईद के दिन हम किसी को मिलने जाते हैं तो वो एक तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और छोटे बच्चों को हम ईदी देते हैं या हमको कोई ईदी देता है, राइट? या कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें हम एक दूसरे को देते हैं, राइट? सो माज़ा नुकद्दिमु लहुम हदिया, what do we give them a gift, right? So Rashid said, Nutil idiya li sigar wal halwiyat lil jami. Means we will give ईदी to kids. ईदी means मैंने अभी आपको बोला कि हम
कुछ पैसे या कुछ मनी हम बच्चों को देते हैं ताकि वो खुश होते हैं। और कितने बच्चे, छोटे बच्चे, हम भी अगर हम बड़े भी हैं तो हम किसी से हमसे बड़ों से मिलते हैं तो हमको भी ये शौक होता है ना कि वो हमको ईदी देंगे या ऐसा, राइट। सो नूतिल ईदिया लिसिगार, we will give Eidi to kids والحلويات للجميع and sweets to all। मतलब हम छोटे बच्चों को ईदी दे देंगे और बाकी सब के लिए हम स्वीट्स लेकर जाएंगे, स्वीट्स देंगे। सालिम said फिक्र राइया मीन्स द ग्रेट आइडिया, मीन्स आपने जो सोचा है बहुत बेहतर है। राशिदुन, राशिद says हैया नज़हब, कम we are going। So Salim said कैफ नज़हब, how we will go, हम कैसे जाने वाले हैं, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम कैसे जाने वाले हैं। राशिदुन, राशिद says इस अल बाबा, ask to the father, ask to the father। Salim said Zain, okay, इस अल मामा father means ask to mother after that। क़ालतिल उम्मू, the mother said ज़ियारतुल अस्दिक़ाई वल अक़ारिबी यौमल ईदी मिन सुन्नति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। See, the mother said, visit with the friends and the relatives on the day of Eid is from sunnah of Nabi Kareem सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीन्स उनकी वालिदा ने कहा कि अगर ईद के दिन दोस्तों से और रिश्तेदारों से मिलना वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से है। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड पीसफुल थिंग, राइट। क़ालतिल उम्मू, द मदर सेड ज़ियारतुल अस्दिक़ाई वल अक़ारिबी यौमल ईदी मिन सुन्नति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीन्स visit with the friends and relatives on the day of Eid, it is from Sunnah way of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam। वहिया तज़ीदुल मवद्दतल मवद्दता, 2 बार लिखा है बेटा, लेकिन मीनिंग एक ही है कि वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। किस चीज को इंक्रीज करता है? सी तज़ीदुल मवद्दता, मवद्दता तज़ीदु का मीनिंग होता है इंक्रीज होना, इंक्रीज करना। मवद्दता मीन्स इफेक्शन, किसी से मिलने जुलने से, एक दूसरे के साथ मिलने से अखलाकियत हमारी दिखाई देती है, अच्छे अखलाक दिखाई देते हैं और एक दूसरे के साथ इंसान को मोहब्बत बढ़ती है मिलने जुलने से, हदिया देने से, राइट। और ईद का ओकेशन तो सबसे बेस्ट है। वही तज़ीदुल मवद्दतल मवद्दता मीन्स इट इंक्रीज इफेक्शन व सदाक़ता एंड फ्रेंडशिप, राइट। सदाक़ता मीन्स फ्रेंडशिप। वतुअद्दी इला तआवुनी बैनहुम, वतुअद्दी एंड लीड, तुअद्दी मीन्स लीड, इला तआवुनी बैनहुम कोऑपरेशन बिटवीन देम। सी, मैंने आपको बोला ना, एक दूसरे से मिलने से, सलाम दुआ करने से, एक दूसरे को अच्छी बातें बोलने से दो फैमिलीज के अंदर, दो लोगों के अंदर मोहब्बत और इत्तिहाद बढ़ता है, राइट। सो वही तज़ीदुल मवद्दतल मवद्दता व सदाक़ता, सो इट इंक्रीज इफेक्शन एंड फ्रेंडशिप, वतुअद्दी इला तआवुनी बैनहुम and its lead to cooperation between them। बैनहुम यानी between them, ताउन means cooperation, right। तज़क्कुर या बुनैया means remember, O my son। ला तदखुलुल बुयूतल आखरीना क़ब्लल इस्तिज़ानी वस्सलामी वला तदखुल मिन वराइल बैती। See, statement is very long, we'll do one statements translation। ला तदखुलुल बुयूतल आखरीना क़ब्लल इस्तिज़ानी वस्सलाम। See, don't enter, ला तदखुल, don't enter बुयूत, homes, al akharin, other peoples, qabla, before, al istizan,
before the permission was salam and the peace. See, don't enter in other people's homes qablal istizani, before permission and peace. See, किसी के भी घर में बगैर इजाजत और सलाम के दाखिल नहीं होना चाहिए. वला तदखुली मिन वराइल बैती, एंड डोंट एंटर बिहाइंड द हाउस. सी, घर के पिछले डोर से आप अंदर चले गए विदाउट परमिशन, विदाउट सलाम, अच्छी बात नहीं है. इट इज नॉट आवर गुड मैनर. वला ताखुज अल अशिया बिदूनिल इज़्न, वला तदखुलिल अशिया बिदूनिल इज़्नी, एंड डोंट टेक थिंग्स without permission, and don't take things without permission. कहीं भी हम जाते हैं, चीजें रखी होती है, कोई खाने की चीज ही क्यों ना हो, राइट, हम ऐसा सोचते हैं खाने की चीज के लिए कौन बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा. लेकिन बगैर परमिशन के हमको किसी की भी चीज उठाकर खाना, ये हमारे मैनर्स के खिलाफ है. हाफिज अला आदाबिल जुलूसी, हाफिज and maintain ala adabil julusi, sitting, the sitting manner. See, and maintain the sitting manners. हमको किस तरह बैठना है, किसी के घर जाएंगे तो अदब के साथ, अखलाक के साथ. ये नहीं कि किसी के घर गए तो सोफों के ऊपर चढ़कर हम कूद रहे हैं, किसी का बेड खराब कर रहे हैं. That is not our manners. Wahinama takul samilla, and whenever hinama, and whenever takul, you eat samilla, take the name of Allah. See, what is the translation of our dua before eating? Bismillah means start or begin eating with the name of Allah, right? Wakul biyaminika, and eat with your right hand. Biyaminika means your right hand. Kul means eat. And eat with your right hand. Wakul mimma yalika, and eat from in front of you. See, this is our sunnah way of eating also. You learn lots of time from the third standard that whenever we have to start eating, we have to start with the name of Allah. We have to start eating with our right hand, and whatever in front of us, we have to eat from there. This is the sunnah way of eating. And I tell you lots of time these things, that we have to follow our little sunnah, and we got reward from Allah Ta'ala, sawab from Allah Ta'ala, and we show our manners to others, right? That this is our manners. This is we learn in our schools. This is our learn from our BD book, that how to eat. What is the manners of eating, right? So my dear students, this is our lesson number 20. So this is our lesson number 20, and I hope you all are understood what they are trying to say us in this lesson. See, my dear students, this is very good message to us, that how to meet in on the day of Eid with the others, what we have to do, what we have to follow, right? I hope you all are understood, but then also I do a translation one more time, that you can write down translation easily, right? So see the first page of our book. So Eid Mubarak. Rashid says Assalamu alaikum. Talim said Wa alaikum assalam. Then Rashid said Alaikum Eidukum Mubarak, means to you, all of you, Eid Mubarak. Salim said Kullu Amin, Happy New Year, God, Allah bless you. Wa antum bi khairin, and you all are well. Rashid says Wa antum bi khairin, and you all are well too. Salim said Hal zurtumul astika wal aqarib, have you visit to the friends and relatives?
Rashid says, La, no, وَنَحْنُ نَرْجُو ذَلِكَ, we hope for that. Salim said, مَاذَا نُقَدِّمُ لَهُمْ هَدِيَّةً, what we gave them a gift. Rashid said, Nutil Idiya Litsigari wal Halwiyat lil Jami, means we will give Eidi or money to the kids, wal Halwiyat lil Jami, and sweets for all. Salim said, Fikratur Ra'iya, means what a good idea or great idea. Rashid says, Hayya Nazhab, come, we'll go. Salim said, कैफ़ नज़हबु, how we are going, कैसे जा रहे हैं हम. Rashid says, Is'al Baba, ask to the father. Salim said, Zain, okay, Is'al Mama, Ba'da, ask to the mother after that. قال الأم, the mother said, زيارة الأصدقاء والأقارب يوم العيد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, and وهي تزيد المودة والصداقة وتؤدي إلى التعاون بينهم. The mother said, visit with the friends and the relative on the day of Eid. It is from a sunnah way of Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, and it increase affection and friendship and lead to cooperation between them. تذكر يا بني, remember, O my son, لا تدخل البيوت الآخرين قبل الاستئذان والسلام, don't enter to other people's homes before permission and peace. ولا تدخل من وراء البيت, and don't enter behind the house or home. ولا تأخذ الأشياء بدون الإذن, and don't take things without permission. حافظ ala adabil julus, and maintain sitting manners also. Wahinama ta'akul sammillah, and whenever you eat, take the name of Allah or start the name of Allah. Kul bi yaminika, eat from your right hand. Wakul mimma yalika, and eat whatever front of you. So this is our translation. I hope you all are understood. If any kind of doubt or any kind of misunderstand or translation confusion, so you have to ask me. You can ask me, inshallah I teach you again. Till then, stay home, stay safe, eat healthy, obey your parents, and dua for everyone to peaceful life. Assalamu alaikum.